Yes, so today I have a question from one of the student, and the question is, if secant alpha plus tan alpha equals to p, then find the value of tan alpha. So look at the question carefully. You have been given this. Secant प्लस tan अल्फा से रिलेटेड आपको आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी, बिकॉज उसी से रिलेटेड आपके पास इक्वेशन गिवन है. सो यू हैव बीन गिवन secant अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल्स टू p, और इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू secant स्क्वायर अल्फा. बट आपको चाहिए secant अल्फा की वैल्यू, तो बट एंड वी हैव secant स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू दिस. व्हाट यू कैन डू टू रिमूव द स्क्वायर, the left hand side will be under square root, so secant alpha will be square root of 1 plus tan square alpha. Now put this value in your given equation. So put value of secant theta, secant alpha in equation 1. Alpha theta, anything they use, that you have to write. So it becomes, the equation becomes root 1 plus tan square alpha plus tan alpha equals to p. I have put the value in this question, in this equation. Okay, so now what you can do, इसके आगे आपको सोचना है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आपके पास है, ये पार्ट रूट में है, ये और ये विदाउट रूट है, तो इनको आप एक साथ लाइए. सो व्हाट यू कैन डू, ट्रांसपोज दिस tan अल्फा टू द राइट साइड. सो बाय ट्रांसपोजिंग यू विल गेट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p माइनस tan अल्फा. ट्रांसपोज करेंगे माइनस tan अल्फा हो जाएगा. सो वी हैव अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p माइनस tan अल्फा. नाउ हाउ टू सॉल्व, बिकॉज दिस पार्ट इज अंडर स्क्वायर रूट, सो बाय स्क्वायरिंग you can remove this square root. So squaring both sides, whenever you want to remove the square root you have to square the term, and we have to square both sides. So this becomes, after squaring we have this equation. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया. यू हैव 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और राइट हैंड साइड में यू कैन यूज a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी. सो इट बिकम्स p स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2p tan alpha. Observe the equation, you have this term same on both sides, so this is cancelled. Now you have 1 equal to p square minus 2p tan alpha. You have to find the value of tan alpha. So बाकी जो parts हैं इनको आप 1 by 1 ट्रांसपोज कर सकते हैं. First you will transpose this, so you have 1 minus p square equals to minus 2p tan alpha, and now transpose this. Minus 2p will be divided after transposing, so you have tan alpha equal to 1 minus p square upon minus 2p. अब नीचे माइनस आ रहा है, ऊपर 1 माइनस पी स्क्वायर है, तो आप माइनस साइन को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट द अपर पार्ट दैट इज दिस न्यूमरेटर लाई, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 1 और बाहर माइनस, नीचे है माइनस 2p इक्वल्स टू tan अल्फ़ा. जब हमने रिवर्स कर दिया है
तो हमने साइन चेंज नहीं किया इसलिए माइनस बाहर पुट किया है, बिकॉज आप देखिए यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी माइनस पी स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज बाहर माइनस है। और ये माइनस और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन ही है, तो वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस बट वी आर जस्ट rearranging so that minus is cancelled. Okay, so now minus minus cancelled and you have got your answer. Tan alpha is equal to p square minus 1 upon 2p. I hope it helps.